सुबह सुबह काम वाम के चक्कर में मैं तो बस भूल ही गई थी कि दिलीप ब्लैक ब्यूटी को लेकर किसी और को देने जा रहे हैं। सच मानिए बहुत बुरा लगा मुझे इस बात का कि जाते जाते मैं उसे एक पल देख भी नहीं पाई और यूं कहूं कि देखना भूल गई। और इस बात का एहसास कब हुआ जानने के लिए सुनते रहिए द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रही थी ब्लैक ब्यूटी की, हमारे पहले कार की। मैं और दिलीप शाम को चाय की चुस्कियां ले रहे थे, तभी अचानक बात छिड़ी ब्लैक ब्यूटी की, यानी कि हमारे कार की। दिलीप ने यूं कहा कि फाइनली ब्लैक ब्यूटी को बेच दिया स्क्रैप में, जहां पर उस गाड़ी को डिसमेंटल कर दिया जाएगा। अचानक ऐसा लगा मानो जैसे मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई हो। घर के कामकाज और रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी मशगूल हो गई थी कि कुछ घंटों के लिए ना मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि दिलीप ब्लैक ब्यूटी देने जा रहे हैं। मैंने दिलीप से बस इतना कहा, याद क्यों नहीं दिलाया दिलीप मुझे कि आप ब्लैक ब्यूटी को देने जा रहे हो? कम से कम मैं उसे जाने से पहले एक नजर देख तो लेती। इतना कहना था बस कि हम दोनों की आंखें भर आई थी। That is right. We felt really bad that we had to give it off. In fact, the reason why I'm saying give it off is because we practically gave it off. The car was my first car and it was with us for a little less than 15 years. And when you've driven a car for 15 years and if you want to sell it off, you know what is going to happen. You can only sell it off as scrap. So we had to sell off the car as scrap. And did we get anything in return? Practically nothing. Because there was no value that was derived out of the car. Why is it that we're talking about all of this? So friends, a lot of times it happens that a lot of these materialistic things, we get so attached and so possessive about them that we forget that we're dealing with something that for which the value constantly keeps depreciating with every year. Now, for example, in the case of this car, the best life of any motor vehicle for that matter is about 5 years, because in that 5 years there is practically zero maintenance. But after 5 years, what does it happen? You start shelling out a lot of money for maintaining the vehicle. And just because you are sentimental towards it, you were attached to it, you keep the car with you for many more years, spend a lot of money on maintaining it, and eventually at some point when you go out there and want to sell the car, you find that there is nothing that you're getting in return when you're selling this car. What we want to convey with this experience that we had is that there is no point creating or building that kind of an attachment with these kind of things, with machineries. Now imagine if I had sold the car at the end of the 5th year, I would have got good value for the car, at least about 50%. I could have bought a new car, spent nothing for maintenance for another 5 years, and the cycle would have gone on. But instead what I did is I kept the car with me for 15 long years and I spent almost equivalent to that of buying a new car on maintaining this old car. And did I get anything out of it? Absolutely nothing. So from this entire conversation, all that we want to convey is don't build this kind of attachment with such kind of materialistic things. You understand that machinery has a life, and at the end of that life
it is better to discard and sell it off and go for something new. So what we want to tell you is, don't get attached to these kind of things. Instead, be a little practical when it comes to dealing with things like that of a missionary. So on that note, I think we can get on to this week's recipe, which is a very simple recipe. And Pooja, what are we making this week? तो दिलीप, आज हम जो बनाने जा रहे हैं उस रेसिपी का नाम है बीटरूट तोरन, जो कि बीटरूट से बनाया जाता है। और जनरली जो तोरन वाली रेसिपी होती है केरला में, वो अक्सर उसमें हम कोकोनट डालते हैं। और बहुत सिंपल सी आसान सी सब्जी है ये, जिसको कि सद्या में भी परोसा जाता है। That is right. In most of the sadyas there are a lot of variety of thoran that is served, and beetroot thoran can be one of them. And like what we said in the last episode, this is a combination of the paripu curry that we discussed in the last week. It goes well with paripu curry, rice, and this is a good combination, isn't it? Yeah, that's right, दिलीप। तो फिर चलें बढ़ते हैं हमारे रेसिपी then. तो श्रोताओं, आज की रेसिपी बनाने के लिए जो है हमें चाहिए होंगे बीटरूट, जो कि हम मीडियम साइज का लेंगे। और इसको हम बिल्कुल चॉप कर लेंगे, जितनी बारीक काट सकें उतनी बारीक काटनी है इसे हमें। और काटने के बाद एटलीस्ट ये मिनिमम 2 कप होना चाहिए, जो हम आज क्वांटिटी बना रहे हैं। और उसके अलावा हमें चाहिए होंगे लहसुन, जो कि 5 क्लव्स ले लें और उसको हम बस रफली क्रश कर लेंगे। और नारियल जो है हम लेंगे 1 कप, जिसको हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। हल्दी पाउडर जो है 1/4 टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, करी पत्ता थोड़े से ले लेंगे। कोकोनट ऑयल जो है हम तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक स्वादानुसार लेंगे। So the ingredients for this simple recipe is beetroot. You will need 1 medium-sized beetroot. In fact, you need to chop it finely and get about 2 cups of chopped beetroot. That is the quantity that we'll need. We'll need garlic, about 5 cloves roughly crushed. Coconut, 1 cup grated coconut. Turmeric powder, about 1/4 teaspoon. Red chili powder, 1 teaspoon. Curry leaves, a few. Coconut oil, about 1 to 2 tablespoon, and salt to taste. तो फिर आइए देखते हैं कि इस साधारण सी रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम एक कढ़ाई गरम करेंगे, जिसमें कि हम डालेंगे कोकोनट ऑयल। और जब कोकोनट ऑयल गरम हो जाए तब हम उसमें डालेंगे राई और उसे हम कड़कने देंगे। और जब हम देखेंगे कि राई कड़क गया हो, तब हम इसमें डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ता और उसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। और उसके बाद बारी है चॉप बीटरूट डालने की, जिसे हम डालने के बाद अच्छे से स्टर कर लेंगे और फ्लेम को थोड़ा धीमा रखेंगे और हम इसे पकाएंगे। और जब तक कि हमारा बीटरूट पक रहा है, तब हमें उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि एक प्लेट लेंगे, जिसमें कि हम डालेंगे ग्रेटेड कोकोनट, क्रश किया हुआ लहसुन, हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्ची पाउडर स्वादानुसार। और इन सारी चीजों को आपके हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लें। और उसके बाद जब हम देखेंगे कि हमारा बीटरूट पक गया है, तब हम इस मिक्सचर को उसमें डालकर अच्छे से इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे। और उसके बाद मिक्स करने के बाद हम कुछ मिनट्स के लिए इसको पकाएंगे बीच में चलाते हुए। और उसके बाद बस हमें गैस बंद करना है और हमारा सब्जी यानी कि बीटरूट तोरन तैयार हो गया है। So first of all, heat coconut oil in a kadai and then add mustard seeds to it and let it splutter. Now once the mustard seeds start spluttering, add the curry leaves to it and fry for a few seconds, and then add chopped beetroot and give it a nice stir. Keep the flame low, cover the vessel and let it cook. Then in the meanwhile, in a plate, add the grated coconut, the crushed garlic, turmeric powder, salt and the red chili powder, and mix everything well with your hand. Now once the beetroot gets cooked, add all of this coconut mixture to it and mix it well. Then cook for a few minutes, stirring in between, and once it is cooked, you can switch off the gas. You can serve it hot along with hot rice and any curry of your choice. But like what we said, this dish goes really well with Kerala paripu curry and boiled rice along with papadam.
दैट्स ट्रू। तो श्रोताओं, आप भी इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करें और हमें बताना ना भूलें कि आपको कैसा लगा ये कॉम्बिनेशन। और हाँ, घी डालना ना भूलें। थोड़ी सी ऊपर से घी जब आप लेकर खाएंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ तो वो बहुत ही मजेदार होती है खाने में। That is right. So I think that's all that we have for this episode, Pooja. That's all, Dilip. So we will come back again the next week. But until then, please do visit thetasteofindia.com for a printable recipe card and all the show notes along with the details of this recipe. You will also find many other tasty recipes in there. If you have any comments or feedback you want to share with us, you can do that on thetasteofindia.com. We are there on almost all the podcasting platforms, including Apple Podcasts and Google Podcasts. So whichever is your favorite podcast platform, pick it and you can listen to the Taste of India podcast in there. Do give us a genuine rating and a feedback for the show on Apple Podcasts, because your ratings helps in the overall ranking of the show in there. So that is all that we have for this week's episode. We will be back again the next week with another tasty recipe. Until then, this is goodbye from Dilip and goodbye from Pooja. You all have a wonderful week ahead.